सपने में भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं बहुत वक्त के बाद कटरीना कैफ से मिल रही हूँ और भूत के अंदाज में, एंड दैट टू सच अ प्रिटी भूत, कटरीना भूत। तो पता चला इट्स एन अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार एक फ़िल्म है जहाँ पर सिर्फ कटरीना नहीं बल्कि 2 और भूत हैं। मतलब वो कहते हैं ना जीवंत भूत, वो भी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। तीसरे को हम एज्यूम कर सकते हैं एक्चुअली। आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन नहीं, कीजिए यहाँ पर कहीं जैसे कि आपने कहा वो पूरी तरह से अपने भूत फॉर्म में प्रकट है। भूत फॉर्म में आ गया। कैसा है यार सिद्धांत? He's saying he's doing well. हाँ, मतलब उसकी भाषा तुम ही समझ सकते हो। बोल रहा है भूत हार्ड। 4 भूत, मतलब ये नाम ही इतना क्वर्क, इतना डिफरेंट है कटरीना। जब आई नो यू व्हेन यू रीड अ स्क्रिप्ट, कुछ बहुत अलग या कुछ वैसा नहीं होने से यू थिंक लाइक क्या कर रही हूँ मैं इसमें। यू आर वेरी वेरी फोकस्ड कि मैं कर क्या रही हूँ। सो आई एम श्योर इसमें आप वो कुछ कर रही हैं जो आपको पसंद आ रहा होगा या आपने एंजॉय किया होगा। मुझे बताओ। No, definitely. I think after a long time, I felt that I hadn't done a comedy film. I realized it wasn't like it wasn't a calculated decision. It just was, I realized that, oh, it's been like good 4 or 5 years I had not done a full-on comedy film. And that's just kind of when the script came to me. Vitesh called me up and said, come hear this narration out of the nowhere. And I was just really blown away. I thought it was a script which was really, really fun. It was full on entertainment, really well written, well defined characters for everyone. Although yes, it's a comedy film, everyone's playing very unique characters and they're very, very well characterized. You know, Ishan is playing a South Indian, Siddhant is playing, you know, full on, he's from the north, and Ragni, who's the character I play, she's got a very well-defined backstory. She's there for a reason. She's come for a reason. And I think the whole package together to me was what was very attractive. I'm sure. ईशान, आइए मैम, सवाल क्या है? सॉरी। शुरुआत इतनी सीरियस फिल्मों से की थी, माजिद मजीदी के साथ शुरुआत की थी। और फिर गूगली मार दी। और नहीं, उसका मतलब पता नहीं, मुझे लगा कि कुछ पढ़ रहा होगा कहीं किसी कोने में जा करके। उसके बाद देन यू नो एक ऐसी फिल्म के साथ शुरुआत जहाँ पे पहली बार ही हम सब ने कहा था कि यू नो यू लुक प्रॉमिसिंग। सो और आज जब एक कॉमेडी इज अनदर जॉनर, जो कहते हैं बड़ा हल्का फुल्का होता है लेकिन सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल करना बहुत मुश्किल के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। जी हाँ। तो ये बताइए कि मुस्कुराहट लाने में कितनी कामयाबी मिली है एटलीस्ट आपके नियर एंड डियर वंस को? कामयाबी का डेफिनेशन तो रिलीज के बाद पता चलेगा मैम, क्योंकि ये फिल्म हमने बनाई है दर्शकों के लिए और ये बहुत ही एंटरटेनिंग किस्म की, यूनिवर्सल किस्म की फिल्म है जो चाहे आप अपने ब्रेन्स घर पे छोड़ के आएँ या साथ लेके आएँ, होपफुली आपको कम से कम एंटरटेन तो करेगी। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेलर बड़ा ऑनेस्ट है ना, क्या है वो पता है। हाँ, तो ट्रेलर ऑनेस्ट है और उससे भी ज़्यादा ऑनेस्ट है फिल्म, क्योंकि जैसे ही हमने नरेशन शुरू किया मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो पहले सीन से आपको सुर बता देती हैं कि आप ये देखने आए हो और ये है फिल्म। ये फिल्म ऐसी है जो डिस्क्लेमर में ही आपको बता देती है कि इसका सुर क्या है जिससे पहले फिल्म शुरू हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वार्निंग। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली नरेशन सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कॉमेडी में बहुत जल्दी पता चल जाता है इफ इट्स वर्किंग और नॉट, क्योंकि अगर आपको हंसी आई, इफ इट ब्रिंग्स अ रिएक्शन आउट ऑफ यू, देन इट्स वेदर यू थिंक इट्स सिली और इट्स चाइल्ड लाइक और इट्स ऑलमोस्ट जुवेनाइल लाइक दिस फिल्म कैन बी इन प्लेसेस, इट टिकल्स योर फनी बोन एंड आई थिंक वी ऑल नीड अ गुड लाफ। और ये उस तरह की फिल्म है जो आपको थिएटर्स में लाएगी, औरों के साथ देखने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज लाफ्टर इज़ इन्फेक्शियस। और इसमें हॉरर का जो एलिमेंट है वो बहुत ही अनोखे किस्म से इस्तेमाल किया गया है उसका, बिकॉज इट टेक्स दैट जॉनरा एंड इट टर्न्स इट ऑन इट्स हेड। कुछ एक नए अंदाज से हॉरर जॉनर को आप देखेंगे इस फिल्म में। तो मुझे बहुत मज़ेदार लगी मैम, एंड आई थॉट कि इसमें कटरीना का जो रोल है वो भी बहुत अनोखा है। हमने इस अंदाज में उन्हें कभी नहीं देखा। सिद्धांत और मुझे साथ में काम करने का मौका मिल रहा था और हम दोनों ने अपने करियर की शुरुआत सिमिलर टाइम पे की है, तो वे बोथ यंग एंड यू नो गनिंग फॉर एक्साइटिंग कैरेक्टर्स। और ये उस तरह की फिल्म है मैम जैसे जाने भी दो यारों और अंदाज अपना अपना, वो जो बड़ी कॉमेडीज़ होती हैं और मेटा है, फार्सिकल है, रिडिकुलस है, यू नो, तो उस तरह की फिल्म बहुत ज़माने में नहीं आई है।
तो ज़्यादा सोचा नहीं, just took it on, took the challenge by its horns. To answer your other question about comedy, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसे परफॉर्म करना मुश्किल होता है, उसका सही सुर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे डायरेक्टर गुरमीत इस फिल्म में बहुत श्योर थे कि उन्हें किस तरह का सुर चाहिए फिल्म में, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, एनर्जी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने कोशिश की है और बहुत मज़ा आया। रोज़ हमने कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ किया और कोशिश की कि हम स्क्रिप्ट से भी आगे लेके जाएं इसे, हालांकि स्क्रिप्ट बहुत फ़नी है। तो आई होप कि ऑडियंसेस को मज़ा आए थिएटर में इस फिल्म को आई एम देखने। श्योर, क्योंकि एक बहुत ही ये कास्ट ही बड़ा, मतलब देयर इज कटरीना, देयर इज ईशान, देयर इज सिद्धांत, मतलब सब मिल करके कुछ नया ही करेंगे। Actually, कल रात रमेश जी की पार्टी में बहुत टाइम के बाद आई मेट राजकुमार संतोषी जी। अच्छा। एंड क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है ना, तो वी वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट अजब प्रेम की गजब कहानी। एंड हाँ, वो राज जी उसमें भी इज अ काफी- मास्टर ऑफ कॉमेडी। Yeah. You have to see with him ना, he acts out every scene Absolutely, and shows of you. course, yeah. And when he used to act out the scene, the whole set, means lightman se leke, assistant se leke, they would be on the floor laughing. अच्छा, वो करके बताते yeah, थे। हाँ, मतलब act know. करके Act बताते करके। हैं, and it was just, it was like coming to set every day and seeing stand-up comedy, you know. And I think in this film, I was telling him, you know, after Ajab, I think this film has characters Madness. as mad Madness. as these boys have, you know. मेरे वो थोड़ा अलग है, but these boys have got, it's not that quirky like the boys have. Like these boys are, it's like मेरा इतना भी चेहरे- बेचारा उसका नहीं है, चेहरा मेरा बता रोल इतना भी गया गुजरा नहीं है मेरा what was रोल। the term you used? Dumb and dumbest. It's like they're competing for that, you know. So obviously I have to balance that out. किसी ने But पूछा था उस दिन the term that कितना I used, गया? they said कि so basically it's dumb and dumber. Yeah, I think they said no, अनुपमा जी ने कहा था। I dumber said and no, it's dumbest. dumbest and dumbest. Yeah. dumbest and dumbest. but कोई सीमा नहीं है इनकी dumbest की। that's what is required in a film like this. You know, you have to go full out there, put yourself completely out there. कटरीना, अपने क्राफ्ट को कहते हैं कि फिल्म दर फिल्म इंसान ग्रो करता है। आपने तो मतलब मैंने प्यार क्यों किया से लेकर अब तक कितने तरह के किरदार कर लिए, और आई थिंक जैसे आपने कहा कि अजब के बाद ये कॉमेडी। नहीं, अजब के बाद नहीं, but I was just comparing the Comedy was boys. No, after that there's been many comedy films. जग्गा वाज Jagga was a comedy film. मेरे brother की दुल्हन was a comedy film. फिर प्रियदर्शन सर के साथ there was I did one comedy प्रियदर्शन, how film. can I forget काफी कुछ that? है. But the boys characters I meant, no? थोड़ा सा एक similarity है. तो ये वो कपिल शर्मा टाइप का क्वेश्चन, आपने सलमान खान और अक्षय कुमार और शाहरुख खान इनके साथ काम किया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई कर रहा था ना, फिर आपने ये क्या, फिर आप इनके साथ। सर ये कपिल दिस जनरेशन इज लाइक, मैम ये कपिल शर्मा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये सबके टाइप का क्वेश्चन है। ये सबने ही पूछा है तो प्लीज जवाब दे दीजिए। ये जनरेशन आई थिंक, मुझे मतलब आई ऑल्सो कम फ्रॉम, मतलब मैं तो उनसे भी, तो मैं वही सोचती हूँ कि आज का जनरेशन ना इज अमेजिंग। दे डोंट टेक मच ऑफ टाइम टू डू एनीथिंग। उनको पता है क्या करना है, और मतलब वो जेन जी कहते हैं ना, अच्छा, I love all the generations. कितना खुश हो रहा है। I love all the I generations. love them all. I think they're fantastic. Everyone I've worked with, and I think it's always been very varied for me. Whether from Since the your the beginning, start, yeah. Salman, and then straight away to John Abraham and Neil Nitin Mukesh in New York, New York, and then after that, I amazing think film. I did a film with Akshay, and then with Imran Khan, which was Mere Brother Ki Dulan, and he was so sweet. Yeah, he was such a sweet. I don't know if you ever met him, but Imran. that was also a comedy film. But in that film, I was doing the louder comedy. You know, so he was such a good sport, always willing. You know, we were then that film we were constantly improvising, because the director of that film was, you know, Ali Abbas Zafar, of course, who was became my dearest friend, and that we would literally do what you and Siddhant have done in this film. हाँ, मेरे Where- ब्रदर की दुल्हन में वो हाँ, अभी ये और अभी सिचुएशन दो। है, और ये दही का पैकेट है, अभी कुछ करो, you know. It would literally be like that, but amazing, yeah. Too much fun, and I think we had a lot of fun on this film. You know, again, it was a situation like that you know, ये situation ये है, ये घर के अंदर है, these are the lines, this is the information we have to get out, but then there would be this whole improvisation of, okay, you know, Ishan would say, I want to do this, and I'd say, okay, let's try this, and Siddhant would show something, and
That's the fun of comedy. the fun. That's the fun of comedy. Like that. कटरीना, लाइफ में एक इतना बड़ा बदलाव है ना, एंड कल मैं आपके पिक्चर्स देख रही थी, दिवाली पार्टीज के हों या फिर करवा चौथ, यू लुक अमेजिंग. Thank you. Thank you. मुझे लगा कि करवा चौथ में आई एम बीइंग बायस्ड आल्सो बिकॉज आई लव हर लाइक एनीथिंग. मुझे लगा सबसे खूबसूरत फोटो आपकी थी, Oh, thank you. सबसे ज्यादा. Thank you. टेल अस समथिंग अबाउट It was a selfie taken by Vicky's right arm. That's the easiest photo because he's he's like that. Yeah, and you he's get a tall. good Yeah, angle. It's a good from there. angle. It's a good angle. Everyone was like, photo. I'm like, give it to Vicky. He'll take it. Selfie, jaldi se. So that was quick and easy. And I saw Husband the come picture. selfie stick. Yes. Now you Add that to CV. Good one. Yeah. That's a good one. Yeah. so panic button क्यों बुलाते हैं विकी आपको? Because I think What I would have a you- tendency to panic. You know how I am. Have you that was more like I panic. That's just my nature. I get hyper. So initially he used to also react, that in that same seriousness that मतलब बहुत कुछ हुआ होगा है ना, इतना panic तो something very bad must have happened. Then he also started realizing Then he understood you. nothing Yeah, has yeah, happened. nothing's really happened. So now he does the opposite. So now after that he named me. He's like, you're a panic button. You're Snafu. just yeah. You're a Snafu. panic button. You know the person constantly runs around like that. Yeah. And that's the great thing is because he's the complete opposite of that. He's always calm, never hyper. He was always like that. And yeah, so that's it's a good balance. So it's fun. अब आप एक बहू है जहाँ when we see a photograph of your सासू माँ, ससुर जी, brother-in-law, मतलब it's like a complete वो राजश्री प्रोडक्शन का मुझे ख्याल आ जाता है ना. कटरीना के बागबान. हाँ, Oh, sweet. जिंदगी कितनी It's all about family. It's all about It's all about loving your family. I think it was, K3G. huh? All about loving your family. Oh, it's wonderful. I mean, I also have such a big family. So I think two families coming together is always a wonderful thing. And in this case, it's we saw that at the wedding, because that was I know the kind of a lot. must That was a be- lot, 7 girls, ta-da! And then, Vicky's side of the family from Punjab, and it was great. It was so much love, so much warmth, so much genuineness, and I think everyone genuinely had the time of their lives, like you can honestly say that. You can't, you can plan it, you can want it, but you're never going to know until it happens. And I think that it was genuinely that way for everyone. शादी And बहुत बड़ा फैसला होता है कटरीना. yes, विक्की yes. कौशल क्या है आपके Yes. लिए, क्यों, कैसे, वो पल जो आपने डिसाइड किया? I think you just know it, right? I think it's just very instinctive when it comes to relationships, when it comes to marriage. And with Vicky, I can definitely say that I knew that. It was very clear. It wasn't like it was something I knew very, very deep inside me. And I think he's a really, really wonderful person, and I'm really fortunate and happy to to have him in my life. You are blessed, and both of you are Yes, blessed I think because so. ये दोनों तरफ से होता है ना? Correct. I'm also nice. तुम अभी वेट करो वही. I'm also good. अब जब वो I'm मिलेंगे very तो happy to see from the sidelines and see. It's so nice to see a happy, genuine, warm couple. And I was also thinking the wedding must have been so wonderful because the families are so different. Yes. It must have brought so much to each other. और वो And So also many there was so different- much, देख रहे there थे was यार, so much मतलब dancing, these boys, Vicky, And full out. Sunny, and their friends, and their इधर family, full and their Punjabi, cousins, and मतलब- they can dance all night. They don't get tired, the Real music celebration comes of life. on and the dance starts, and that's यही तो है, it's आज great ही तो fun. है. आज ही तो है. Great fun. So Diwali is again a very पहली दिवाली तो नहीं. पहली दिवाली है As ना, the पहली शादी दिवाली के together. बाद. शादी के बाद पहली दिवाली शादी बेटे. के बाद. I think he's been away for a while, and we're looking forward to celebrating Diwali together with both of our families. Thank you so much. Thank you. And wish you all the luck. Meet you very soon. Yes. Now that it has started, I think it shouldn't be like such A big gap, for sure. थैंक यू मैम, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया. Thank you. आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारी फिल्म जरूर देखिएगा जिसमें हम भी हैं.